Dear students, welcome to 20th lecture of atomic structures. आज के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड इट्स कंक्लूजंस एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. जहां आपको प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है हमें, उसके साथ में ये भी दोनों एसोसिएटिव रूल्स हैं, इनका जानना भी बहुत जरूरी है. आइए देखते हैं. सबसे पहले हमारा पास है फर्स्ट टॉपिक Pauli exclusion principle. Pauli exclusion. देखिए इस प्रिंसिपल में इतना केवल कहा गया है, किसी भी एक एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लें, उनकी सभी 4 क्वांटम नंबर्स एक जैसी नहीं हो सकती है. इस तरह if 3 quantum numbers are same for any 2 electrons, then 4th quantum number sure will be changed. Clear? So you can say there no can have all 4 quantum numbers same for any 2 electrons of same atom. किसी भी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लें, उनके ऑल 4 क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं होंगे. ठीक है. दैट इज इफ n l m are same for 2 electrons in an atom, then values of small s must be different. वो श्योर डिफरेंट होंगी. यानी एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा. जहां से आपको एक ये बात मालूम हुई, ठीक है ना. values of small s, that is spin quantum number. क्लियर? ये दोनों जरूर डिफरेंट होंगी. तो आपको ये बात ही क्लियर हुई हमारे पास में कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के अलाउड नहीं है. इसलिए इसे कहते हैं एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन वर्ड की मीनिंग है ये हमारे पास. एक्सक्लूड कर देता है हमारे पास में. ठीक है ना. दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ 2 electrons of same spin is excluded according to Pauli's rule. So it is called exclusion principle. Therefore, presence of two electrons of same spin in an orbital is restricted or excluded. That is why it is called exclusion principle. Clear? That means if an orbital, one electron is in the clockwise direction, then next sure will be in anti-clockwise direction.
according to this rule. Take both in clockwise or anti-clockwise is excluded according to Pauli. Now, what's the conclusion of this principle? आइए इस बात पर भी देख लेते हैं हम लोग। उससे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। We go for easy example. In helium atom, 2 electrons are present. For which values of N, L and M are similar, but value of small s differ. You see here, the helium has 2 electrons. So according to above principle, these 2 electron goes in 1s subshell. Clear? That is 1s2. Thus 2 electrons are present. This is first electron, this is second electron. This is first electron and this is second electron. Clear? Now we check the values of N, L, M and S. N, L, M, S for first electron and for second electron. Clear? You see here, both electrons are present in first shell. This is principal quantum number. So N is equal to 1 for the both. And both are present in S subshell. You know, for S subshell, azimuthal quantum number small s 0. So both have same value of azimuthal quantum number. And you know, values of M are minus L to plus L. So they are minus 1 to, sorry, यहाँ पर 0 है, तो minus 0 to plus 0, that is 0. So both have same value of magnetic quantum number. But first electron is in clockwise direction. So the spin quantum number is plus half, 1 by 2. And another electron, second electron, is in anti-clockwise direction. Its spin is anti-clockwise. So it has a spin quantum number is minus 1 upon. So there are 3 quantum numbers are similar in 2 electrons, first and second electron, but spin quantum number is different. That is the Pauli's rule. Now we go conclusions of Pauli exclusion principle. क्या इनके conclusions हैं? आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला conclusion तो आपने यही देखा कि can exist maximum 2 electrons in an orbital with opposite spin. That is, can exist maximum 2 electrons in an orbital of opposite spin. That is, one is in clockwise direction, then other is in anti-clockwise direction.
This arrow indicates clockwise direction, clockwise spin, and this or anti-clockwise spin. Clear? This is now another, the number of subshells in a principal shell equal to small n. किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल्स ये होंगे. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट शेल has only one subshell, 1s. Second shell has two subshells, 2s and 2p. The same way, third shell contains 3, that is 3s, 3p and 3p subshells. ऐसा हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं. Now, we go third conclusion. Number of orbitals in a principal shell equal to n square. Clear? Number of orbitals in a principal shell is n square. For example, n is equal to मान लो 2 है, तो यहाँ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2 स्क्वायर, दैट इज 4. यू नो n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? आपको 0 और 1. इट विल बी 2s एंड 2p. और s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1. और p में कितने होंगे? 3. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 2 3 4. ये 4 आ रहा है. In the same way, we go next. Number of electrons in a principal shell equal to 2n square. For example, n is equal to 2. Total electrons will be 2 into 2 square, that is 8. हम लोग इसी में देखें, 2s contains 2 electrons, 2s2. यहाँ भी 2 electrons होंगे, ठीक? One में clockwise, anti-clockwise, यहाँ भी 2. The total number of electrons will be 8. In this way, 2s contains 2 electrons and 2p subshell has 3p orbitals, in which each contains 2 electrons maximum, so there are 8 electrons. Next, can find out all 4 quantum numbers of an electron in an atom. किसी भी एटम के सभी 4 क्वांटम नंबर्स को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन में. Show, it is question to you, show all 4 quantum numbers of electrons present in
second shell, that is L shell. You know, in the nucleus, it is K shell, L shell, M shell, K, L, M, for which n is equal to 2 in this way. So principal quantum number for L shell is 2. Clear? So the principal quantum number is 2 for L shell. Clear? Now you decide azimuthal quantum numbers. You know, 0 to n minus 1. So there are for 2, there are 2 numbers. There one it will be 0 and other will be 1. Only 2 possibles. It will be really 2s subshell and it will be 2p subshell, because L is equal to 0 for S subshell and L is equal to 1 for P subshell. And now we decide magnetic quantum numbers. You know, minus L2 plus L. Minus L2 plus L. Clear? So for this, it will be 0. For this, there will be 3 values. Minus L2 plus L. Minus L, 0 or plus 1. Now show spin quantum numbers. Spin quantum numbers. This plus half or minus half. This has 2 electrons. One is plus half, other is the minus. In the same way, it contains 2 electrons also. First is clockwise. There is also only 2 electrons. Plus half and minus half. There are also 2 electrons. There plus half and minus half. अभी हम लोगों ने पढ़ा था maximum number of subshells in a shell equal to small n. देखिए how many subshells? 2, and this is equal to n. 2 के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था maximum number of orbitals in a principal shell is n square. So इसमें n square में कितने होंगे? That is 2 square 4. See here, there are 4 orbitals are present. These are. Now you know, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, पहले भी लोग पढ़ चुके हैं. ठीक? In a principal shell, maximum number of electrons is 2n square. That is 2 square is equal to 8. See here, there 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You know, maximum number of orbitals in a subshell is 2l plus 1. See here for this subshell. Put the value of L. There it comes 3. There are 3 orbitals. 1, 2, 3. You know, maximum number of electrons in a subshell is 4l plus 2. For this, L is equal to 1. So there are 4 into 1 plus, यहाँ क्या हो गए? 6. See here, there 6 electrons are present. In this, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनको P6 से लिखते हैं, S2 से लिखते हैं, and so on. ऐसा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी पढ़ चुके हैं. Clear? Now we go. Another interesting heading, Hund's rule. जैसे हमने अभी n is equal to 2 के लिए फाइंड किया है, n is equal to 3 और 4 के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे.
Now we go. Hund's rule of maximum multiplicity. इस रूल में क्या कहा गया है, आइए वो देखते हैं। इसमें कहा गया है किसी भी एटम में कोई सबशेल ले ले हम लोग, यू टेक एनी सबशेल, ठीक, उस सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा, देखिए ध्यान से, ये हुड्स रूल किसके लिए, फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, ठीक, इट इज यूज्ड फॉर filling of electrons in a subshell. इस रूल में ये कहा गया है किसी भी सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल होते हैं कि वहां पर जहां तक पॉसिबल हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए और जिनके स्पिन अलाइक हो, पैरेलल हो. So we can say as far as possible number of unpaired electrons, unpaired means इसकी पेयरिंग ना हुई हो, only clockwise हो, only anti-clockwise हो, as much as possible, ठीक, number of unpaired electrons is maximum in a subshell which have same as spin, or you can say which have parallel spin. इसी रूल को हम लोग दूसरे स्टेटमेंट में भी कह सकते हैं. आइए देखते हैं another statement. So you can say this rule in this way. During filling of a subshell, first one electron goes into each orbital with parallel spin or same spin, you can say. Then start pairing of electrons. This is also statement for Hund's rule. Clear? Now, we take one example. Very interesting example. Distribution of electrons in p subshell of nitrogen. What is the atomic number of nitrogen? 7. That means nitrogen has 7 electrons. First you write its configuration.
according to above principle, what will be 1s2, 2s2 and 2p3. You know s subshell has only one s orbital, but p subshell has 3p orbitals. So you can write also in this 1s2, 2s2. 2p has 3 orbitals, which are 2px1, 2px, 2py, 2pz. Clear? 2p subshell has 3 orbitals. These are named orbitals px, py, pz. Since p subshell of second shell, so 2px, 2py, 2pz. Now you have only 3 electrons. So according to Hund's rule, one electron goes in each orbital with same spin. उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, but you have only 3 electrons. All 3 electrons are filled. This is the correct configuration. ठीक है ना? तो 2px1, 2py1, 2pz1. If you write configuration 1s2, 2s2, आप कहेंगे इसको जो है हम 2px2, 2py1, 2pz0 भी लिख सकते थे. You have 3 electrons, 2, 1, 3 हो गए हमारे पास में. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड एंड थर्ड. ये गलत हो गया कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 चल रहे हैं, तो ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक, रूल ये कहा गया है कि वन इलेक्ट्रॉन पहले सबमिक में बांट दीजिए. तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग. इफ यू फिल इन दिस डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर है 2px1, 2py1, 2pz1, same configuration है. ठीक, if electron enter in this manner, first in clockwise and second orbital in anti-clockwise, then clockwise, it is also wrong according to Hund's rule. Electron in each orbital goes in same spin, then start pairing. पेयरिंग वाली बात अभी नहीं समझ में आ गई. चलिए इसको भी समझ लेते हैं. अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी 7 इलेक्ट्रॉन्स. डी सबशेल है और वहां 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. You know, D subshell has 5 d orbitals. Clear? These orbitals जो आपके हैं, उनको आपको मालूम है dxy, dzx, ठीक, और dxz, dx square minus y square और dz square. अब ध्यान दे, यहाँ टू डिफरेंट मैनर्स हैं. एक तो ये ऑर्डर है आपका ऑर्बिटल्स का, और अनदर ऑर्डर है, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिटल मानते हैं. सेकेंड ऑर्बिटल आपका जो है जेड-एक्स है. सॉरी, ये तो आपका सिमिलर हो गया कि आपका YZ और ये ZX हो गया. इन द सेम वे थर्ड ये और फिर इन दोनों को ऑर्डर में लेकर चल सकते हैं. एक ऑर्डर ये है आपका साइंटिस्ट ऑर्डर. अब देखिए 5 d orbitals है एंड यू हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स. अकॉर्डिंग टू Hund's rule, this first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron. First, one electron goes in each orbital with same spin. Then start pairing. Distribution of the 5 electrons. Taken after it, you have 2 electrons. So these 2 electrons goes again in this direction. Clear?
So this is the first electron and this is the second. No, this is second electron. This is not second electron, this is second electron. Who's this? हम नहीं कह रहे, Hund says. ठीक, this is the third electron, this is the fourth electron, this is the fifth electron, this is the sixth electron and this is the seventh electron. ठीक है ना? अब आप यदि यो चाहे कि हम लोग D7 इलेक्ट्रॉन से इनको इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1 2 3 4 5 6 7, नो ये रॉन्ग है, गलत है। ठीक, यहां सब एक साथ बैठ गए आकर के, सबको पहले एक एक बांटो। ठीक, ये झुंड मत लगाइए। हुंड ने कहा लगाओ ना झुंड, हुंड ने कहा लगाओ ना झुंड, पहले एक एक बांटो तब जोड़ा बनाओ। ये है हुंड। इस चैप्टर में और भी बहुत सी बातें हैं, जारी रहेंगी नेक्स्ट वीडियो।